Friends, I'm Bharatbhushan Sharma. I have around 39 years experience as a medical representative and manager, and I have faced so many interviews in my life. I have worked with some of the good companies, and I would like to share my experience with you so you can have much better preparation for your interviews. दोस्तों, ज़्यादातर मैंने दोस्तों को देखा है कि जब भी मैं सुनता हूँ, बात करता हूँ, क्या कर रहे हो आजकल, क्या बात है, वो कहता है कि मेरा सिलेक्शन तो रिटर्न में तो मैंने क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में पता नहीं क्या बात हुई कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, कुछ कारण होंगे, जिसमें से कुछ कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ध्यान रख लें तो हो सकता है कि आपकी इंटरव्यू में सफलता जो है वो कहीं दूर नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप जहाँ कहीं भी जाएँ, जिस मर्जी कंपनी के लिए जाएं, जिस मर्जी डिपार्टमेंट के लिए जाएं, जिस मर्जी दुकान के लिए जाएं, वहाँ की आप ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन अपने पास में रखें। आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हैं तो उसके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन रखें, उनके नाम क्या हैं, उसमें क्या मटेरियल है, जहाँ तक संभव हो। अगर वो आप रखेंगे तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली उनका जवाब दे पाएंगे। अगर कोई भी इंटरव्यू लेने वाला अगर आपसे पूछता है तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ में कुछ पॉइंट्स इसमें रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे जब भी कभी आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। दोस्तों, एक तो ये देखिए कि यू शुड हैव ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन। आपकी शर्ट लाइट हो, आपकी पैंट डार्क हो, जो मैचिंग हो, उस पैंट से मैचिंग का टाई आप रख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट कलर्ड शर्ट, मे बी स्मॉल चेक्स, देन डार्क पैंट एंड मैचिंग टाई। एंड ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, whenever you go for an interview, you should have necktie all the time with you. You should have few neckties with you and few combinations, and you should be well dressed. It should be properly ironed, and it will give you a proper combination, great combination rather when you go for this. दूसरी बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, you should have be clean shaved. If you have beard, then trim it properly. You should have proper haircut. I mean, these are the basic things which makes your personality more pleasing. So, with product knowledge, my initial suggestion to you is you should have the proper combination, the dress combination rather. Friends, then we have selected some points. You should be well dressed and the matching combination should be there, as I mentioned earlier. Friends, be clean shaved or always wear necktie. You should have the complete knowledge, as I mentioned, of the products, the active, confident sitting posture. Friends, whenever you enter in the chamber, you should have the activeness in you. Whenever you enter, you just keep standing until unless somebody asks you to shake hand. He might or he might not ask you, but if senior asks you for this shaking hand, then only you have to shake hand. Otherwise, you should just keep straight, keep your documents in your left hand, keep your right hand always free. So just if you can pick up anything, if anybody wants to shake hand with you, and sit in a active posture if somebody asks you to sit. Until unless somebody offers you the seat, normally they offer you the seat, you have a proper seat, be active, and you should not have the lazy posture, because this active posture that gives very good impression to your interviewers. Then friends, keep smiling whenever possible. Keep smiling, because smile is the one thing that gives very good impression to anybody. Everybody likes when you smile. Keep smiling whenever possible. Repeat questions. Whenever somebody asks you a question, you just repeat the question. If somebody asks you, what is your name? You just say, sir, my name is Bharatbhushan Sharma. If somebody asks you, what is your father's name? Sir, my father's name is Shri Indradev Sharma. So, when you repeat the question, sometimes it might happen that you do not know the proper answer and you need some time to recollect it. So, when you repeat the question, if possible, then you have the proper time to think about the answer and you get the answer and you win the other context. If you do not know, sometimes friends, it is not expected from anybody that he should know each and everything. You might know a few things, you may not know few things. So friends,
whenever you do not know anything, do not bluff. Don't tell a lie. Just accept. Sorry, sir, I don't know, but definitely I'll check it, I'll find it, and I'll know about it. So दोस्तों, जब भी आप इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू देंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप वेल ड्रेस्ड होंगे, आपकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग होगी, दोस्तों आपका साक्षात्कार, आपका इंटरव्यू हमेशा सक्सेसफुल होगा। फिर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई ये पूछता है कि सपोज हमने आपको ले लिया और आपको मान लीजिए दूसरी कंपनी है, हमसे अच्छी कंपनी है, और वो आपको ले लेती है, तो आप क्या करेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है दोस्तों। मेरे पहले इंटरव्यू में 81 में मुझसे ये पूछा गया कि अगर मान लीजिए हम आपको लेते हैं और आपको दूसरी अच्छी कंपनी लेती है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। मैंने कहा सर मैं आपकी कंपनी छोड़ दूंगा, मैं उस कंपनी में चला जाऊंगा। दे वर हाईली सरप्राइज्ड। दे सेड व्हाई? आई सेड आई हैव ऑल द राइट्स फॉर द बेटरमेंट। इफ द कंपनी इज offering me much better, definitely the company is better than you, and I have to work whatever time I have with me. I have to work for a company, and any company offers me better, I'll definitely go with that. Then they said, suppose if the difference is not much, what will you do? I said, I'll live with you. Friends, keep on increasing your vocabulary, keep on learning new words, keep on learning from seniors, keep on learning from your elders. I'm sure. Have patience. Whenever somebody asks you a question, you should not get disturbed. You should have patience all the time. Answer patiently. If you don't know, say sorry, sir. And I'm sure you will succeed. With all my best wishes. Then friends, I'll keep on coming with the new videos. I'll help you, whatever experience I have with me. But my suggestion is, if you like my video, please like it and push the bell. And if you like that it is worth, please share it or subscribe it. With all my wishes, very soon to meet you. Good luck.